नाउ गाइस, महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है, इसमें टोटल 5 सेक्शंस पूछे जाते हैं. ठीक है. सबसे पहले आपका वर्बल एबिलिटी करके एक आता है, देन यू हैव योर लॉजिकल रीजनिंग, देन यू हैव योर कॉन्ट्स, एंड देयर इज वन मोर सेक्शन विच इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. Just like other exams, Maharashtra CET has only add-on section of abstract reasoning, just similar like your CAT, SNAP, NMAT. ये भी उसी तरीके का एक एंट्रेंस एग्जाम है, बस इसमें 5 टोटल सेक्शंस पूछे जाते हैं. ठीक है. जैसे मैंने मेंशन किया, लॉजिकल रीजनिंग जिसमें टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फिर आपका आता है कॉन्ट का सेक्शन जिसके अंदर आपका 8th 9th 10th का मैथ्स रहता है. देन यू हैव योर वर्बल सेक्शन जिसके अंदर आपका ग्रामर, आरसी, पैराजम्बल, ये सारे टाइप्स के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फिर आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जिसके अंदर आपके कुछ विजुअल रीजनिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है. सो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस विच आर बीन आस्क्ड इन योर एंट्रेंस एग्जाम. ठीक है. अभी नेक्स्ट, कौन कौन से कॉलेजेस आप इस एग्ज़ाम के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको एमबीए का डिग्री देते हैं स्पेसिफिकली इन महाराष्ट्र. ठीक है. इसमें सबसे पहले सबसे टॉप नॉच कॉलेज आता है आपका जमनालाल बजाज. टॉप इंस्टीट्यूट, बेस्ट आरओआई आपको मिलने वाला है इसके अंदर. इसके पैकेजेस, द प्लेसमेंट्स, द फैकल्टी, एवरीथिंग इज वाओ. द ड्रीम बेस्ट कॉलेज विच यू कैन गेट थ्रू सीईटी एंट्रेंस एग्जाम इज जमनालाल बजाज इफ़ यू आर इन महाराष्ट्र. ठीक है. इसके अलावा भी there are many other aspirants who can apply through various other exams to get into this college. We'll be making a video about this college, what all programs they have and everything. So make sure you subscribe and like to our channel and stay tuned for such new and upcoming videos. ठीक है. उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉप कॉलेज आता है सिडनम, देन देर इज़ वेलिंकर, देर इज़ पुम्बा. सो ऑल दीज कॉलेजेस हैव गुड ROIs एज कम्पेयर टू द फीस एंड प्लेसमेंट्स वॉट दे ऑफर, एंड ऑल्सो एज कम्पेयर टू द अदर बी schools which are there. So this is again the top best colleges which you can apply through Maharashtra CET, which is also known as MHCET also. ठीक है. सारा एंट्रेंस एग्जाम वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट MBA के लिए स्पेसिफिकली महाराष्ट्र CET. ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम. जैसे ही आपको सिलेबस पता चल गया है, क्या सिलेबस है, क्या पेपर पैटर्न है, आई कम टू द पेपर पैटर्न ऑल्सो. So how you need to start now guys, this entrance exam has total of 200 questions and 2.5 hours of timing. As I mentioned earlier about this topics or the sections which are there, which is related to your verbal हो गया, आपका logical reasoning हो गया, आपका abstract reasoning हो गया, ये सारे जो आपके sections आते हैं इसमें all together you will be getting total number of questions are 200 and 2.5 hours of timing is there. तो ये टाइम और क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा अनसिमिलर है, राइट. तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है वो आपका स्पीड और एक्यूरेसी. दैट मीन्स आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन यू नीड टू टैकल इट at the earliest. You need to know what will be the answer without wasting much time, which requires consistent practice, and you need to have a proper strategy about which questions you need to be attempting. We will be having a proper strategized video for that, but again make sure you subscribe and also comment in the questions. So each correct question which you will be attempting in this exam would be fetching you +1 marks, and there is no negative marking. How good is that? Normally people are scared of these entrance exam wherein you land up into negative marking, but then Maharashtra CET doesn't have any kind of a negative marking. ठीक है. So we spoke about what exactly is MBA and what Maharashtra CET is going to get you, and what is the pattern and the syllabus. We discussed about that. We spoke about the top colleges which are there, what is the exam pattern, and how exactly you need to prepare is to be consistent, you need to practice, you need to have proper plan, and need to improve on your speed and accuracy. Now what exactly, who is the conducting body for this examination is the government of Maharashtra, who conducts this exam every year in the month of March. The registrations will be starting soon. Most probably in the month of Jan the registration starts, and then you need to put in your details and everything. So if you are someone who is looking forward to get into the top B schools, you can get in touch with us. We are starting both online and offline batch for aspirants who are planning to crack CET entrance exam this year. We are at Thane. If you are looking forward to get prepared offline individually in a classroom, so you can come and get in touch with us over here. The numbers are already given in the description box below.
And my name is Sneha. I'm going to be your mentor, and I'm going to talk about the exams in colleges, how you need to get through that, what all things are required, and which college would be suiting you the best. We'll be planning and executing about that. There are other faculties who will be training you for the similar way. If you have any doubts, concerns, please make sure you subscribe to our channel. Also on our Instagram page handle, which is already given in the description box. Make sure you like and share, subscribe to our channel. I'm requesting this, and so that you guys can get such content, and even we feel motivated to make such videos. You already have other channel named Ask MBA also. This is a new channel specifically for CET entrance exams, so you don't need to search here and there, and you can directly land up into this channel and get all the details. Okay, thank you so much. Bye bye, and all the best. Make sure you connect to us, and we'll have the further discussion. Thank you.